योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर लेकर बैठ जाइए। स्पाइन, हेड, नेक इरेक्ट, आईज क्लोज। टेक डीप ब्रेथ, स्लोली ब्रीथ आउट, रिपीट फ्यू राउंड्स, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। आप बंद आंखों में सुनिए। मेरा नाम प्रशांत। जैसे मैं एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा में, बालासोर डिस्ट्रिक्ट। तो 3 भाई 1 बहन। तो मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बॉम्बे में स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में काम करता था। तो काम करने के बाद मुझे बहुत सारी शिफ्ट, नाइट डे शिफ्ट चेंज करना होता था। तो नाइट शिफ्ट में मुझे बहुत शारीरिक रूप में बहुत परेशानी शुरू हुआ। तो मैंने कई सारे डॉक्टर दिखाया, बहुत सारी जगह पे जाता था, छोटे छोटे कंप्लेन लेके। तो डॉक्टर ने सलाह देते थे, ये मेडिसिन खाने से ठीक हो जाएगा, वो खाने से ठीक हो जाएगा, बहुत सारी मेडिसिन देते थे, A to Z बहुत खाता था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि साइड इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारी परेशानी शुरू हो रहा है। ऐसी सिचुएशन आ गया कि मुझे लगा कि किडनी पूरा फेल हो चुका है, कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मेरे को जान बचेगा कि जाएगा, ऐसे मुझे डाउट हो रहा था। इस सिचुएशन में मेरे चाचा का लड़का बेंगलुरु में थे, कोर्स कर रहे थे। तो उसका कोर्स कंप्लीट हो चुका था। मैंने जब एक बार कॉल रिटर्न किया तो उसने बोले कि मैं एक मेडिकल में काम कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आइए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपको कुछ सलाह दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने इस लाइन पे आने के लिए सोचा। तो बॉम्बे से सीधा बेंगलुरु आया। विवेकानंद यूनिवर्सिटी में मैंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे पहले जुगो इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जुगोथेरापी कोर्स किया। ये कोर्स करने का मुझे यही सक्सेस मिला कि कुछ ही दिनों में मेरी रहन सहन, खान पान के स्टाइल बदल गया, बहुत सारी चेंजेस आया, मैं अपने परेशानी को खुद समझ आया। उसके बाद मेरा सारी मेडिसिन छूट गया और मैं पूरा विश्वास से जुगो प्रैक्टिस करते गया। कुछ ही दिनों में मेरा शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में बहुत हेल्दी महसूस करने लगा। तो जब अच्छी से पढ़ाई करने शुरू किया, PGDID कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद वहाँ पे एक मेडिकल है, आयुर्वेद जो हॉस्पिटल है, काम करने लगा। योगो आयुर्वेद चिकित्सा देने लगा लोगों को। तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया, अलग अलग सेक्शन में काम किया। एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, ओवरवेट, कोई घुटने में प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, तरह तरह के लोग वहाँ पर आने लगे। तो सभी लोगों को ट्रीटमेंट देने के बाद मुझे अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आया कि योग से सलाह निकाल सकता है, कोई भी परेशानी का हल निकाला जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस में गेन करने के बाद मैंने काम शुरू किया। आयुर्वेद ग्राम हॉस्पिटल में काम किया, व्हाइटफील्ड, फिर संत नागपाल डायग्नोस्टिक सेंटर में काम किया, दिल्ली। उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में करने के बाद मैंने अपार्टमेंट में काम किया, स्कूल में काम किया, पार्ट टाइम 1 घंटे का ट्रेनिंग देता था, वापस आता था। इसी तरह बहुत सारे घर में अभी जाकर सिखाता हूँ। तो आप जो भी परेशानी बोल रहे हैं, आप अपने विल पावर से, कॉन्फिडेंस से आप प्रैक्टिस करते जाइए। रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद कुछ ही दिन में आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये सब अभ्यास करने के बाद मैंने आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने जब अलग अलग सेक्शन में शुरू किया काम, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज, कोई ओवरवेट, कोई हेडेक, माइग्रेन, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तरह तरह की परेशानी का सलाह मैं अभी देता हूँ। उसके साथ साथ अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डिजाइन का एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन मैं कन्फर्म करता हूँ और टीच करता हूँ। तो अभी आपको कुछ सिखाऊंगा। लंबा गहरा सांस लेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा सांस लें, ओम बोलेंगे, ब्रीद इन,
breathe in, breathe in, gently open your eye and stand up. अब ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। सांस मैं पहले दिखा देता हूँ। सांस लेते हुए दोनों पैर मिलाएंगे, हाथ सीने के सामने। सांस लेते हुए हथेली फैलाएंगे, पंजे पे खड़े हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए एडी नीचे, दोनों हाथ सीने के सामने। ये अभ्यास को 3 बार रिपीट करेंगे। हैंड्स इन आउट ब्रीदिंग कंटिन्यू करें। ब्रीद इन, spread your hands, breathe out, palms together, heels down. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Gently stop, palms down. Now do ankle stretch breathing. Palms in front of your thigh. Breathe in, stand on your toes. Hands up. Breathe out, heels down, palms in your thigh. Repeat this practice 3 times. Breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down. Breathe in, up. Breathe out, down. Gently stop. Now do ankle stretch breathing. इस अभ्यास के लिए दोनों हाथ इंटरलॉक करें, सीने के ऊपर रखें। फिर सांस लेते हुए हथेली को ऊपर, पंजे पे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए एडी नीचे, हाथ सीने के ऊपर। कंटिन्यू करें 3 टाइम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. Gently stop. Palm down. Now do sun salutation. Come in front of your mat and Namaskar Mudra. Repeat the mantra. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. अपने right breathe in, raise your hands up, bend back, backward bending. Breathe out, bend forward. Padhastasana. 3 left leg back. Ashwa Sanchalanasana. Breathe in. Breathe out, both leg back. Dandasana. 5 Sasankasana. Breathe in and out. 6 breathe in and out. Ashtanga Namaskara. 7 Cobra Bhujangasana. 8 Mountain Parvatasana. 9 Sasankasana. Breathe in and out. 10 breathe in, left leg forward. 11 both leg forward, breathe out. 12 breathe in and breathe out. Namaskar Mudra. Once more, say Namaskar Mudra. Om Bhanave Namaha. Om Bhanave Namaha. Breathe in, backward bending. Breathe out, forward bending. Breathe in, right leg back. Breathe out, both leg back. Breathe in and out, Sasankasana. Breathe in and out, Ashtanga Namaskara. Breathe in, Cobra. Breathe out, Mountain. Breathe in and out, Sasankasana. Breathe in, right leg forward, Ashwa Sanchalanasana. Breathe out, both leg forward, Padhastasana. Breathe in, backward bending. Breathe out, Namaskar Mudra. Gently stop. Now relax few seconds. Get ready for balancing posture, tree posture. Legs together. Gaze one particular point. Look. And left heel inner side of your right thigh. Hands over head. Repeat this practice 1 minute. Gaze one particular point without moving your body. Gently stop. Palms down, legs down. Go to opposite side. Again. Right heel inner side of your left thigh.
hands above your head. Maintain normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gently stop. Palms down, legs down. Relax. Go for Virabhadrasana Asana. Hold the left ankle by left palm. Right hand over head. 1, 2. Left knee up, right palm front. Look at the fingers, right palms. Normal breath. Hold again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hands up. Slowly palms down, legs down. Side change. Go to opposite side. Hold again. Normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gently stop. Come back. Go to sitting posture. Sit in Shithila Dandasana. Spread a leg, front, palms behind, and relax few seconds. Shithila Dandasana. Take deep breath. Slowly breathe out. Breathe in. Expand your whole body. Slowly breathe out. Breathe in. Expand your whole body. Slowly breathe out. Gently stop. Legs together. And both the hands above your head. Breathe in, breathe out, go down. Paschimottanasana. Hold, normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe in, come back. Palms behind. Fingers pointing backward. Relax few seconds. Now go for Dandasana. Heels together. Toes together. Both the legs together. Palms backside. Fingers pointing backward. Lift your buttock up. Palms backside. Fingers pointing backward. Lift your buttock up. Hold again. Normal breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go down and relax. Get ready for Ardha Matsyendrasana Asana. Legs together. Right heel inner side of the left thigh. Inner side of the left thigh. नीचे से. And left heel outside of the right knee. Hold your left leg by right palm. Left palm back side. Look your left back. Normal breath. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twist your head front. Remove your hands, legs. Side change. Go to opposite side. Again, left heel inner side for right thigh. Right heel near the left knee. Hold your right feet by left palm. Look right back. Normal breath. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twist your head front. Remove your hands, legs. Sit Bhadrasana. Come back to Bhadrasana. Now do the camel posture called Ustrasana. This is very good practice for half. You want to do half Ustrasana. Okay. Now it's improve the flexibility on your spine and strengthen your thigh muscles. Remove the excess fat from the stomach. Now let's do stand on your knees and palms on your waist. Slowly breathe in, breathe out, go back. If possible, hold both the heels, or you can do half Ustrasana. Toes on the ground. Hold normal breath. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly palms in the waist. Come back center. Sit. Go down again. Sasankasana. Bend forward. Normal breath. Relax completely.
Totally relax. Gently breathe in, come back. Now I'll do breathing practice. The breathing practice called Kapalvati. Active exhalation, passive inhalation. For that, get ready. Sit straight, spine and neck erect, eyes closed, and through the air forcefully. Same time flap your abdomen up and down. Let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Slow down. Stop. Relax. Come back to normal breath. Observe the beautiful blood circulation. Feel the changes after the practice. Feel whole body oxygenated, energized. Observe the beautiful blood circulation. It's a very good practice for improve the digestion power, and it's reduce the excess fat from your body, improve the oxygen level in your body, and maintain your body healthy. Remove all stress and tension, bringing the smiling face. Let's repeat the same again. Second time. Again start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slow down. Stop. Gently stop. Come back to normal breath. Relax completely. Totally relax. Now we'll do the Bhastrika Pranayama. For that, as you breathe in, raise both the hands up. Breathe out. Give a pressure to your elbow backside. Continue, repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Slow down. Stop. Relax. Very similar benefit as well as Kapalbhati. Do the practice regular, empty stomach. This practice having few limitations. People having any sort of surgery or severe back pain, women having periods or pregnant time, they should avoid this practice. If you completely fit, you can repeat this practice. And if you are overweight, you can repeat at least 5 to 10 minutes regular. Very better. Now do the Nadi Shuddhi. Use Nasika Mudra for right hand and close your right nostril by the thumb. Breathe in left, slow and deep without sound. Breathe out right. Again breathe in right, breathe out left. Repeat the practice at least 2 to 3 minutes without sound. Improve the concentration, memory, release the stress and tension, and increase the vital capacity of the lungs. A very simple practice, but a lot of benefits you can achieve. It's need to regular practice. Repeat the practice regular when your stomach is empty. If you want to do practice after food, give 3 to 4 hours gap and repeat. Gently stop. Release your hands and get ready for eye exercise. Gently open your eyes, move your eyeballs up and down without moving your body, without any jerk movement. Move your eyeballs very smooth, up, down. This practice again very good for eyesight, people having cataract, two vision, short sight, long sight.
You may do practice slow, but after few days you can remove your glass. Within few days you can feel yourself. It's improve the eye power, improve, you stimulate the all internal organs around eyesight, and this practice again release the stress, tension, improve the concentration, memory. After finish 8 to 10 times, gently look center and move your eyeballs left, right, sidewise. Continue, repeat the practice 8 to 10 times. Gently stop. Now do the diagonal movement, extreme right up, extreme left down. Continue, repeat again few rounds. Very smooth. As you completed 6 to 8 rounds, good opposite side, extreme left up, extreme right down. Continue, repeat few rounds. Gently stop. Now go for rotational movement. Rotate your eyeballs clockwise direction. Reverse. Opposite direction. Gently stop the practice. Close your eyes, rub your palms together and cover your eyes. Produce the humming sound 3 times. Take deep breath without produce humming sound. Breathe in. Breathe in. Gently stop, palms down and Namaskar Mudra. I'll repeat the closing prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः Sarve Santu Niramaya. सर्वे सन्तु निरामया Sarve Bhadrani Pashyantu. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rub your palms together. Give a nice massage on your whole body. Gently open your eyes. Thank you, all of you. Now, please share few words. What is your experience after attending 3-4 months? Tell your experience. Few words. What you gain by the yoga.
What are the benefits you get? Please say a few words. You can say a few words I'm feeling better and loudly. Come forward little. after practice I'm feeling better and What are the improvement feeling in the my शारीरिक and मानसिक रूप joint में? pains also reduce and my breathe also deep. Breathing level. What are the changes coming? My breathing is Brahmari is increased after practicing and pulse also correct. And शारीरिक रूप में क्या क्या बेनिफिट आपको महसूस हो रहा है? Now I have no muscle pain. I'm feeling better and joint also little bit joint pain also reduce and I'm feeling lightness, calm down my mind. I'm feeling more better. Thank you. Please sir, tell few words about what are the benefits you. I was suffering for asthma for last 10 years, but after practicing this asana, I'm feeling better. I was using medicine regularly and taking inhaler, but I am stopped inhaler, taking medicine also stopped, and I'm daily practicing minimum 15 to half an hour in my busy schedule. And I hope by the practice of yoga asana, everybody will get benefit. Thank you. Thank you so much. Thank you.